Hello guys, and welcome back to Surface Stories, and I know I read the comments. In our Japanese yokai list, I clearly read the comment that you guys wanted a Doraemon creepypasta video. But let me preface this by saying that today we're going to talk about a topic that might darken your childhood memories a little. If you were a child of the 90s or 2000s, Doraemon was definitely your favorite. The blue robot cat who solved all of Nobita's problems with his magic pocket. Doraemon became so popular in India that Indian homes adopted Doraemon in Hindi dubs. Doraemon. But the story I'm going to tell you today isn't about the beloved Doraemon. It's the story of an urban legend. This is the story of a very famous creepypasta in Japan called Doraemon Talent, or Doraemon Tarento in Japanese. This story is actually a documented urban legend that was discussed on the Japanese internet forum 2CH in the early 2000s. The earliest known discussion is from March 2005, which you can view yourself, and I've included a link to it in the description. People have claimed that this episode aired on Friday, July 20th, 1984, at 7 p.m. JST, and that too only once. And some people also believe that this episode also holds the secret behind the death of Doraemon's creator. The actually scheduled episode that day was Nobita's fairy tale trip, and I got a spare fourth-dimensional pocket. But viewers got to see something else that day. Some theories suggest that it could be a false memory or a distorted version of a bootleg tape. People say that when this mystery episode aired, its title was Talent, which was actually distorted to look like Shine, which means death or die in Japanese. That's right, but enough is enough subtext. Now, let's talk about what actually happened in this creepy episode. Imagine you're a little kid. It's Friday evening and you're sitting in front of the TV watching your favorite cartoon. Doraemon starts, but something seems off from the very first scene. The animations look strange. The characters look squished and squashed, as if someone has forcefully squeezed them. The faces are off-model, meaning they're not properly drawn. The colors also look worn out, as if someone played an old VHS tape too many times and over-recorded it. And the voice acting doesn't match the original cast at all. Doraemon's voice sounds a bit strange in this episode, and Nobita's voice lacks that innocence. This episode wasn't overly scary, meaning there were no ghosts or jump scares, but its dark themes, confusing plot, and odd visuals traumatized Japanese children at the time. Years later, when they grew up, they shared this memory on the internet. And it turned out that not only they, but many others had actually seen this episode, or perhaps they all had a shared nightmare. Nobody knows for sure. The episode begins. The title screen appears with a simple black background with the words Tarin written in white text. And one thing to notice here is that there was no background music. The cheerful Doraemon theme we all remember to this day was also missing. Only the text appeared on the screen for a brief moment, and then the episode began. The scene begins outside Nobita's school. It was raining at the time, but the rain doesn't seem normal to us. The animation was so intense that the raindrops looked crooked
as if they were hand-drawn by someone inexperienced. Doraemon and Nobita were standing under umbrellas. Nobita saw a board and asked Doraemon, "Doraemon, I want to go to an underground shopping strip. How will you let me go?" This request was a bit strange because normally Nobita never talks about going to such a specific underground location. This character was never made like that. I mean, I'm pretty sure you all know how scared Nobita is in the series. But without asking anything, without any explanation, Doraemon takes out a gadget from his pocket. It looks like a pass loop, a circular ring-like device. He places it on the ground and suddenly a dark circle hole appears in the ground. The hole was pitch black, like a bottomless void. Then, without thinking, both of them jump into it. And there was just silence at that point. I'm pointing this out because you probably already know it. In normal Doraemon episodes, whenever he travels on a gadget, happy music plays in the background. Colorful the visuals come, and we even see our characters. But this episode was just darkness, silence, and a third sound, which was the landing and nothing else. When the screen lights up again, Doraemon and Nobita are standing in a small, brick-walled room. The room was very small. The walls were almost suffocating, made of reddish-brown bricks, poorly hand-drawn, and the lights were dim here and there, with a single bulb flickering inside. Now, both look around in confusion because there was no door or window in that room. Just four walls. Then, suddenly, out of nowhere, a girl appears in front of them. She was Bee. हॉलवे की तरफ डोरेमोन और नोबिता कंफ्यूज्ड एंड स्कैर्ड पुलिसमैन के पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो कलरफुल साइलोफोन हॉलवे से गुजरते हैं और एनिमेशन देखते हुए तुम्हें लगेगा कि हर स्टेप पे टाइल्स प्रेस हो रहे हैं लाइक अ पियानो अगेन, लेकिन कोई साउंड नहीं आती है वहां से। देयर वॉज एन एयरी साइलेंस अगेन, बस फुटस्टेप्स और वो रोते हुए बच्चे की आवाज जो कि बैकग्राउंड में फेड होते जा रही थी। पुलिस उन्हें एक डोर पे ले जाता है, एक छोटे डार्क रूम पे। रूम के बीच में एक मिनिएचर ग्लोब रखा था, एक छोटा सा अर्थ का मॉडल, वो भी स्टैंड पे। ग्लोब बहुत डिटेल में नहीं दिखाया गया था इस एपिसोड में, बस एक राउंड स्फेयर पे ब्लू और ग्रीन कलर करे हुए थे। इसके बाद पुलिस ऑफिसर बिना कुछ कहे वहां से चले जाता है और डोर्स क्लोज कर दिए जाते हैं। डोरेमोन और नोबिता अब अकेले होते हैं उस डार्क रूम में, सिर्फ उस ग्लोब के साथ। दोनों ग्लोब के पास जाते हैं, उसे घूरते हैं और इस समय पर हमें घड़ी की सेकंड्स की सुई की टिक करते हुए आवाज सुनाई देती है। अगेन देयर इज नो बैकग्राउंड म्यूजिक गाइस, कोई साउंड नहीं था बिकॉज दिस इज अ किड्स एनिमे। फिर सडनली ग्लोब में एक क्रैक दिखता है, थिन लाइन जैसा कुछ सरफेस पर, और उस क्रैक से एक डार्क लिक्विड लीक होना शुरू हो जाता है। लिक्विड ब्लैक था या डार्क रेड ये बता पाना थोड़ा मुश्किल था, क्योंकि अगेन एनिमेशन इतनी लो क्वालिटी की थी कि क्लियर पता नहीं चला था। लेकिन जो पता चलता है वो ये कि लिक्विड काफी ओमिनियस और थ्रेटनिंग है। डोरेमोन और नोबिता डर के मारे कांप जाते हैं इसे देखकर। वो एक दूसरे को पकड़ लेते हैं, हक करते हैं डर में, और कैमरा एंगल फ्रीज हो जाता है उस मोमेंट में। दोनों कैरेक्टर्स डर के मारे खड़े दिखाई देते हैं और वो लीकिंग ग्लोब उनके बगल में था। और फिर एपिसोड खत्म। Abruptly, there was no resolution or explanation to this. बस black screen, no credits,
नो प्रीव्यू फॉर नेक्स्ट एपिसोड, नथिंग एट ऑल। जिन जापानीज व्यूवर्स ने इस एपिसोड को देखा था या क्लेम किया था कि उन्होंने देखा था, वो ये कहते हैं कि उनके दिमाग से कभी भी ये चीज निकली नहीं है। कंफ्यूजिंग प्लॉट, पुअर एनिमेशन क्वालिटी, डार्क टोन और वो हेल्पलेस फीलिंग जब एपिसोड बिना किसी आंसर के खत्म हो गया था। दे स्टिल लिंगर इन देयर ब्लड। कुछ थ्योरीज सजेस्ट करती हैं कि ये एक फॉल्स मेमोरी हो सकती है या फिर मास हिस्टेरिया जैसा कुछ फिनोमिनॉन, जहां लोगों ने कुछ और देखा और बाद में मेमोरीज मिक्स हो गई उनकी। कुछ लोग कहते हैं कि ये बूटलेग टेप्स या फिर मिस रिमेंबर्ड एपिसोड्स का केस है, लेकिन सबसे क्रीपी थ्योरी वही है जो मैंने तुम्हें शुरू में बताई थी कि इस एपिसोड का टाइटल था टैलेंट और वो यहाँ पर डिस्टॉर्टेड होकर दिखाया था, विच रेड आउट शीने, जिसका अगेन मतलब होता है डेड। क्या ये एपिसोड डेलिबरेटली ऐसा बनाया गया था या फिर इसका लिंक इसके क्रिएटर से था, जिनके बारे में हमें पता है कि उस टाइम पीरियड के आसपास उनकी तबीयत ठीक नहीं थी और वो कुछ ही समय बाद मर गए थे। क्या ये एक ऐसा एक्सपेरिमेंट था जो कि एक्सीडेंटली एयर हो गया था, या फिर क्या सच में सब लोगों ने कलेक्टिवली इमेजिन करा था ये चीज? जो भी हो, ये अर्बन लेजेंड आज भी जिंदा है और अगर तुम कभी किसी पुरानी रिकॉर्डिंग या लॉस्ट फुटेज के बारे में सुनो जिसमें तारेंटो वर्ड लिखा हो, तो सोच लेना देखना चाहिए तुम्हें एपिसोड या नहीं। So that was the creepiest episode of Doraemon, जिसका नाम था डोरेमोन टैलेंट। एंड इस एपिसोड में मैंने जानबूझ के ही डोरेमोन के क्रिएटर की बात नहीं करी है क्योंकि उनकी डेथ के पीछे भी बहुत सारी थ्योरीज हैं। तो अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं उनके बारे में भी एक वीडियो बनाऊं, देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। बट विद दैट ये क्रीपी पास्ता भी यहीं पे खत्म होता है गाइस। डू लेट मी नो अगेन कि तुम लोग को ये कैसा लगा या फिर तुम्हें कोई स्पेसिफिक क्रीपी पास्ता चाहिए किसी और एनिमे के लिए। तो बट विद दैट आई होप दैट यू गाइस आर हैप्पी एंड हेल्दी एंड मैं मिलता हूँ तुम लोगों के सब अगले एपिसोड में। बाय बाय।